Good morning, students. Today we start our chapter 4, that is Roman numerals. Okay, and student, you have earlier studied about the Indian number system and international number system, and there is other Roman numeral system that is developed by Romans people, and that is called Roman numeral system. Okay, the system that is developed by Romans people, that is called Roman numeral system. In this Roman numeral system, we use these alphabets to make the number in Roman numeral system. Okay, so in your earlier class you have studied about this Roman numeral system, that is, this is the symbol for 1. And this V sign that we use in our English alphabets, that is in Roman numeral system, this is the value of 5. That is X, this is the value of 10, and this sign L is the value of 50, and C is the value of 100, D is the value of 500, and M is the value of 1000. You have earlier studied about this basic Roman numeral system. So students, in this chapter 4 Roman numeral system, we have to make Roman numerals of large values. Okay, so before starting this, there is some rule in Roman numeral system. That means how we have to write Roman numeral system or our Indian number system to Roman numeral system. So the first rule is, if a symbol in Roman numerals is repeated, we add its value as many times as it appears. That means students, Roman numeral system में अगर कोई भी आपका जो सिंबल है, if repeated, अगर रिपीट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को ऐड कर लेंगे जितने टाइम्स वो रिपीट हुआ है. ओके, सो लेट्स, हियर इज योर एग्जाम्पल that you see, this is the sign of 1. okay, अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो दिस इज द साइन ऑफ I, एंड इसकी वैल्यू आपका रोमन नंबर सिस्टम में क्या होगा, 1. दैट मीन्स 1 प्लस 1, क्योंकि रूल 1 आपका क्या कह रहा है कि रोमन नंबर सिस्टम में इफ द सिंबल अपीयर or repeated, then we add its value as many time as it's appear. जितनी बार वो appear कर रहा है हम उसकी वैल्यू को उतनी टाइम ऐड करेंगे. So we add this for this 1 and for this side 1. 1 plus 1 is equal to 2. That means this is the Roman numeral system of 2. Now another example, x and x, and you know the value of x is 10. And here it is 2 times repeated, 2 बार repeat हो रहा है आपका. So we write 10 plus 10, that is 20. Okay, that means this is the Roman numeral system in, that is 20. Now 2 times C, and you know C is the value of 100. So we write C, for first C 100, for second C 100. Okay, here is 200. If C repeated 3 times, then we have to add 100. That means this is 300 if the C is repeated 3 times. Now rule 2 is, if a symbol of a smaller value is placed to the right of larger value, then we add the 2 values. Okay, सो स्टूडेंट, आप रूल 2 आपका क्या कह रहा है कि अगर कोई सिंबल, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू का कोई सिंबल अगर लार्जर वैल्यू के राइट हैंड साइड में है तो हम उन सभी वैल्यू को ऐड कर लेंगे. लेट्स टेक एग्जांपल, हियर इज, दिस इज द साइन ऑफ 5 एंड दिस इज फॉर द 1. ओके, और आप ये देख रहे हैं कि दिस इज द साइन ऑफ 5 एंड द स्मॉलर वैल्यू दैट इज 1 प्लेस टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटर वैल्यू. इस 5 के राइट हैंड साइड आपका क्या है, स्मॉलर वैल्यू है. सो अकॉर्डिंग टू रूल 2 वी ऐड दिस वैल्यू, इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि लार्जर वैल्यू के राइट हैंड साइड में आपका स्मॉलर वैल्यू है. ओके,
So this is the value for 5 plus this is for 1 and this is for 1. So this is the value for 7. Okay. Now another example, that is LV, and you know the value of L is 50 and V for that is 5. Okay. So 50 plus 5, that is 55. So student, every time you have to know if the smaller value place right hand side of the greater value, then we add its value. ओके उन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ग्रेटर वैल्यू के आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए. ओके. नाउ द रूल थर्ड इज if a symbol of a smaller value is placed to the left of larger value, then smaller value subtract from larger value. So student, rule 3 is opposite of rule 2. Okay, rule 2 said about the addition and rule 3 is explanation about the subtraction. Okay, so rule 3 is opposite of rule 2. That means rule 3 आपका क्या कह रहा है कि अगर कोई स्मॉलर वैल्यू प्लेस अगर कर रहा है, अगर आपके लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड प्लेस कर रहा है, तो हम उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, लार्जर वैल्यू से माइनस कर देंगे उस स्मॉलर वैल्यू को. ओके. सो हियर यू सी this is the value for 1 and this is the value for 5. Okay, and see here this is 5 and 5 के आपके left hand side में smaller value है. Okay, so you subtract from 5. Okay, so we write 5 minus and this value 1, that is 4, and you know this is the value for 4. ठीक है. Now another example, C D, and in this student you see this is the value for 100 and this is the value for 500 and 500 is greater from 100. और आप देख रहे हैं कि 500 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, 100. ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू रूल 3, वी सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस. सो 500 minus 100, that is 400. So this is the value for 400. So student, these are the basic rule how to write Hindu-Arabic system in Roman numeral system. Okay.